तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. Okay, as people keep joining, I will give two messages which can go on record. One is the default setting of the youth who are defense aspirants. So the default setting in the mind is that you prepare clear an examination, or you get a call for SSB, and around 1 month or so prior to the SSB, you think that now you have to start preparing for SSB. So when you think about that, then you start searching for coaching academies, and then you pick up some coaching academy based on whatever inputs you get. And you go for a 15-day coaching. And in most cases, the result is that you're not successful. Then you come back, you give some thought as to what went wrong and all that. And you have some ideas, you collect them. And again, all these things go on the back burner. Once again, SSB comes up after, say, 5-6 months. Again, you start the cycle again. And 1 month prior to that, you start thinking, thoda bhi exercise, running kare, thoda fitness kare, and thoda GK update kare, and then you again go for your SSB. Now, this default setting of the youth as regards SSB is not appropriate. To enhance your competence or enhance your chances of selection at SSB, you need to lead an effective life. That would be the biggest input you can give to enhance your chances of selection at the SSB. So if you are a student, be a good student. And if you are a worker, be a good worker. In addition to that, you should have decent general awareness and decent physical fitness, which, as it is, every competent citizen should have. This is all what SSB entails. You can't prepare for SSB in the spurts the way you people do. So this is my one advice to you, that, enhance your chances of selection at SSB by leading an effective life. That is one. The second thing is related to No Frills Academy. I got inputs surprisingly from students who said that No Frills Academy is more suited for NDA aspirants, क्योंकि ये long term वाली बातचीत करते हैं, पर जनरली लोगों के पास short time होता है, तो SSC, TEC, NCC, TGC, such like entries, other coaching academies are more suitable. This is absolutely a misconception. There is no shortcut method to personality development. So No Frills Academy's approach works for life. It works for any SSB and not just ND or technical entry scheme SSBs. So that is the second thing I wanted to tell you. Yeah, now we are open to take on questions. I think Sahil was the first one to join. So Sahil, please go ahead, ask your question. Sahil, please go ahead. Sahil is unable to get through. Okay, next online I see is Karthik. Karthik, if you can Hi, hear sir. me, unmute and ask Yes, your sir. question. Yeah, Karthik, go ahead. Good night, sir. Yeah. Sir, my basic doubt is I have qualities, but I haven't improved it. I haven't analyzed it. How to outcome our inner qualities? Please repeat your question. I have not grasped it properly. Sir, how to develop our character qualities?
how to develop our character and qualities. Karthik, this is a lifelong struggle for all of us. Uh, have you read our book? Sir, I have read some books, but No, the book which I have written. Have you read it? The won't say, Practical sir. Guide to Become an Officer. No, sir. You have not read. So very appropriately, the first chapter in it is Who am I? मैं कौन हूँ? And in most cases, we have a hazy concept as to who am I, because we get varying inputs about us from our parents, from our teachers, from our friends. And based on that, we do form some kind of own self-concept. And this is somewhat hazy. So nobody is absolutely clear. I mean, you as well as I'm not very clear as to what are my absolutely in clear terms as to what are my strengths, weaknesses, what are my biases, and so on. So what you and I can do is create a mental image as to what I would like to be. That is something which you can do, Karthik, isn't it? Yes, sir. Sir, And thereafter start working to improve upon the shortcomings which are there so that you reach your mental image. Fine. And what happens as we grow in life, this mental image will go on reforming and go on changing with times, And accordingly, we will keep having new goals and would keep working towards those. okay. I would request you to get hold of our book Okay, and sir. read these personality development related Sure. essays, and Yes, it will give you a lot of clarity as to where you stand now and what needs to be done to reach where you aspire to reach. yes, sir. Fine. Otherwise, it's a very difficult question to answer for yourself and for me also to answer that. In case you enroll for our guidance program, then I can assess you and give you a pretty clear picture as to where you stand and what needs to be done to make the requisite improvements to attain the level of getting selected at SSB. Yes. Overall, in the life, I mean, there could be so many other things also. Fine. So I have another question, sir. Please go ahead, Karthik. So I have an infinity complex. I am a common man with no good physique. How can I become an officer? Often it comes to my mind and strikes, sir. How to overcome First, it? firstly, Karthik, uh, the people who get selected at the SSB are very common people. We are not extraordinary persons. I was a very ordinary person when I joined. And so you can listen to the interviews of our selected candidates and you would be able to identify with quite a few of them and realize that there's nothing very extraordinary about them. It is just that they were found adequate in the all-round qualities required required for selection to be trained to become officers. That is all there is to it. Fine. Yes. So Karthik, I'll tell you, if you get hold of our book, you will get a lot of clarity on the questions which you have raised now, and maybe so many other questions which may be arising in your mind. Yes, sir. Fine. Sure, I will wait, sir. Most of these things will get settled, and you should be able to work out a plan for self-improvement. And if it is not very firm and you are not very clear as to whether the plan is, solid or not, then No Frills Academy is always there. You can join us. Yes, sir. Thank you for the kind reply, sir. Most welcome, Karthik. Now, next one Thanks. online was a girl. She had raised her hand. Please go ahead.
Yes, go ahead. Okay, if she is not going ahead, then next name I can see here is of Sahil. Will give the chance again. Probably he'll be audible now. Sahil, please go. So Sahil, you're muted. Acha, Nishant. Hello, am I Yes, audible, Nishant. sir? Nishant, you're audible. Please go ahead. Jain, sir. Jai Hind. Sir, I want to ask two doubts that, sir, with regard to current affairs, as a common student, as a student also, we should know, we should aware about the environment which is going around us, right, sir? But as far as SSB interview is concerned, for example, sir, now the Ravindra, clashes, please or we keep can say, yourself muted. Ravindra, please keep yourself muted. Nishant, you please go ahead with the question. yes, sir, yes, sir. So as far as the current affairs which is related to the SSB interview, let me give one example that now which the clashes which is going on between the ethnic group of in Manipur between these Metis and Kukis. Sir, we know the fact, but we don't know what is true, what is right. So how to give our views on that type of questions which would arise in the interview? Firstly, Nishant, there is nothing like SSB specific general knowledge. General Okay. knowledge is about life. And as a responsible citizen, you should be well aware of things which are going on in the country and globally also. Primarily, I would say that you should have an India-centric approach, that the world revolves around India. So what affects your and my life as Indian citizens is of greatest significance, and what affects the global things which affect our lives are of lesser significance, but they're relevant, like the war in Ukraine, the high oil prices, the global inflation, the global reduction in demand. All these things affect your and my lives. And of course, our geography, that means geography of India, our economy, our political state, and what all is going on, they are all relevant. Now, your question specifically you are asking is that as regards the situation in Manipur, you are getting conflicting reports through various media sources, and you are finding it difficult to decide as to what is the correct picture. Am Yes, I sir. right as far as interpreting your question is concerned? Yes, sir. Yes, sir. You are right. Fine. Okay. So thing is that, Nishant, today what has happened is, you see, this situation was not there prior to 2014. Prior to 2014, media was normal media as it exists in normal democracies, and media gave you correct information. Today, 98% of the major media has converted into Godi media. I hope you know that. Yes, sir. Yes, sir. So it gives you falsehood. Earlier, no prime minister or government was so much focused about self-image that it fed false propaganda. So this is Modi's gift to New Bharat. Now think is that some facts you would know, and these are that a conflict is going on in Manipur. This is a fact. Yes, sir. And
the tussle is between Meiteis and Kukis because of some past reasons and something to do with a high court judgment of Manipur. You are aware of these things? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There are other facts that a lot of people have died, and the Kukis have openly stated that they have no faith in the chief minister. Yes, sir. And you also know, despite all the publicity, that whatever Modi and Amit Shah have done has failed. Yes, sir. Yes, sir. So these are facts. So if these facts are extrapolated and a sensible analysis done, then you know that the double engine Sarkar is a failure. Yes, sir. Definitely. That there is a need, if the central government was sensible and well-meaning towards not the interests of BJP, but the interests of India, then the state government should have been dismissed and president's rule imposed. Yes, sir. So if these are facts, are they not good enough to give you a good picture as to what's going on? Yes, sir. But actually, this goes against the system, right? When you apply this view to someone. Goes against Modi and Modi Sarkar. Am I Right, right in stating myself more right, sir. Right. clearly? So, as are you supposed to be looking after the interests of India and the Indian masses, or Modi and BJP government represent India to you? Sir, I would represent the masses, what they actually think. That is what it is. So the problem is this WhatsApp universities and Godi media and all that have created an image that Modi depicts India and BJP depicts India. That's bullshit. Yes, sir. So get clarity. Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, why I asked this questions, because this question is personal to me, because I am also a tribal. I am also scheduled tribe. So as far as Right. that is concerned, my personal view should also come, right? That's why I asked this question. You see, personal view would not be a very good idea, because if it gets biased, then it's not good. If it is unbiased and it is fair, then expressing that view is good. Yes, sir. Yes, sir. So Sir, a fact is, at the moment, that cookies are getting an unfair deal at the hands of the Manipur government as well as the central government. This is a fact. This is what you and I should know, and this is what you and I should have the courage to speak, which most of the Indian society today lacks. Definitely the media. yes, sir. That's it. Okay, sir. Did Thank you, sir. I make any wrong statement? No, sir. No, no, sir. No. That's what it is. So you understand the things, just understand them correctly and have the courage to speak out. That's how we can make a better society. We can sort out our problems and we can make a better India. Yes, sir. Yes, sir. But actually, sir, why I was hesitating is that going against, not going against, speaking against the system to the people, it becomes a little bit difficult for you also. You see, thing is that why should we get bothered? If you you know me a little bit, and if you would have read my answers on Quora, which is the biggest forum on which I engage in tackling questions of different nature, particularly of a political nature, you would see how much trolling goes on. Does it bother me? Yes, sir. If you start getting bothered by trolling, that means you are lacking self-belief, no? Yes, sir. Somewhere. Yeah, yeah, yeah. So why should you do that? Go by facts and state the things.
Why are you Yes, getting sir. scared? Okay, sir. I understood your question. Answer, sir. Yeah, And the second, can I ask the second question, sir? go ahead. Sir, I read your book, The Practical Guide to Become an Officer. Uh, So Sir, much. I reached you through social media, through Instagram and YouTube in class 12 when I was giving my NDA. Now I'm in third year of my graduation. Okay. Sir, but at that time in 12th class, I did understood the book very nicely. The thought process was not there that time. But when I read now, I felt energized. I felt little bit disconnected to the world and to me what I was. And now, sir, and the question is that, sir, in this book, the thing which is most important is that to know yourself, to introspect yourself, and to do the right things according to right way. Right, sir? Yes. So, sir, what are the few things to keep in mind while you are introspecting yourselves so that you can do them and then implement them in your future? The thing is that we are primarily promoting rational thinking. Our first essay is Who am I? The question asked by the previous person was also related to that. So once we have a reasonable clarity as to who am I, all of us are struggling to improve ourselves in our lives. No? Yes, sir. So that is what we should do. And if we improve our competence, overall competence, then society should find us suitable to play a decent role. Yes, sir. No, after all, we are making ourselves more competent. That's Yes, what the book is trying to guide us to do. In that, being honest with ourselves and being honest with the society, being open and frank are natural outflows of this kind of a nature of a person. Just because others do not think or act in this manner, should we get influenced? no, sir. If we don't, if that answer logically is there, then go ahead and charter your own course. Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes, sir. Definitely, I understood now. That's what you and I can do. See, Nishant, I'm 63. When I joined NDA, I found I was not in sync with what the more than 95% of the NDA cadets outlook was. Neither was it when I was an officer in service, nor is it now. Yes, sir. Yes. But that's okay, yeah? Yes, sir. So long as I'm convinced that what I'm doing is right, well, that's it, yeah. I have to answer to my conscience all the time. I have to Yes, live sir. with Yes, myself sir. more than anyone else. Yes, sir. So, but you have to pick your own answers to your life situations. Yes, I sir. can Yes, sir. only, through the book, I will only try to guide. And Yes, that's sir. my Definitely. perception. And my perception is my perception. It would be amalgamation of all my, I mean, sensible thoughts as well as all my stupidities, Yes, sir. which I Yes, sir. don't know. Yes, sir. Sir, what actually our mind says inside within us, what is right, that we have to follow, right, sir? That's my suggestion. No, sir. I'm saying my points Yes, that what how. I would advise you to do that, but you have to take your decisions. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Nobody else can take it for you. Yes, sir. Right? The thing is that when Kejriwal came to politics, there was a lot of idealism. Yes, sir. Today it's not there. You know, some of the idealistic political leaders like Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, he could not stand them. Yes, sir.
because he felt that practical politics is little different from the idealistic thoughts with which Aam Aadmi Party was formed. Yes, Those are his sir. choices. You will have to make your own choices in your life. Yes, sir, definitely. Yeah. Okay, sir. Okay, thank you, sir, for solving my queries. Most welcome, Nishant, and thanks for Good evening, posing sir. thought-provoking questions which have made me also think. Thanks a lot. Yeah, Abhi, please go ahead. Good evening, sir. Sir, myself Abhi Sharma from Meerut. अरे Sir, I मेरठ am. के मेरे गांव वाले, Yes, sir. मेरे गांव के ही रहने वाले हैं आप. Yes, sir. Sir, I am from Modipuram. Fine, fine, fine. Sir, Yeah, I am. please go ahead. Sir, I am currently doing my masters in agriculture from the Sardar Vallabhbhai Patel University. Okay. Sir, I have recently got conference out from Jalandhar. Sir, sir, interviewer and GTO always ask me in my every SSB that why have you choose BSc honors agriculture? Instead, you are having PCM background and a decent percentage. Sir, I am having 88% in 12th class. So they always ask, and sir, this time the GTO has even asked, Saksham, what are the use of this masters in the army? Sir, this feel that, sir, army is going too much technical and I am having a non-technical degree which is no use in the army. Sir, this create any impact on my selection? देखिए नहीं, your choice of subject which you are pursuing has a very direct relationship with what your alternative career option is. So I Yes. presume that you feel that studying agriculture science would make you competent at leading the alternative career. I hope that is correct. Yes, sir. So that is how you have made your choice. Now Yes. that you are able to clear this CDS or a AFCAT exam, and from your marks and your qualifications, you are eligible to attend the SSB. That means you are meeting the technical criteria. Yes, sir. And thereafter, if you are, as I said, a competent student who has decent general awareness and who is reasonably physically fit, you should be able to get selected. Yes, sir. Do not get overly concerned by the questions Yes. or what should be the ideal answers. There's nothing like Sir, ideal answers. You should give the correct answers. That's it. sir, can I tell you that what I have answered, sir, and why Go I have, ahead. Go sir, ahead. sir, I have, sir, in my colony, sir, in Modipuram, you know, sir, you are also in Merit, sir, National Seed Corporation, State Agriculture University, sir, there is a belt of these agriculture institute there. And sir, Yeah. their professors and scientists are also live in, sir, my locality also. Fine. So, sir, at that time after my 12th, I was unable to clear, sir, JEE mains, which and not getting a good, decent college, but getting a private college. Fine. Motivated me that instead of going to these private college and paying so much of fees, you can do better in this BSc honors agriculture and having a, सर इसमें सर दोनों तरफ से वो है सर फायदा. एक तो आप रिसर्च में भी जा सकते हो क्या कहते हैं, और इसमें आपका क्या कहता है बैंकिंग साइड, प्राइवेट सेक्टर, सीड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. तो सर बहुत सारे मैंने इन सारे फैक्टर्स को डिसाइड करते हुए ये चूज करा था. और सर बट मुझे बाद में थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हुआ मैं इसमें कि क्योंकि सर एक तो मेरे घर से कोई बैकग्राउंड में नहीं था, मैंने बस सर कि भाई जॉब मुझे मिल जाए थोड़ी अच्छी सर, इसलिए चूज करी थी बस एग्रीकल्चर कि सर गवर्नमेंट जॉब अच्छे से. अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो. ये सेल्फ डाउट्स क्रिएट करना ये सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होता है. आप कोई भी नई चीज करोगे ना, आप पे आस पड़ोसी हंसना शुरू करो, यार तू ये कैसे करेगा, ये कैसे हो जाएगा. डोंट गेट बॉदर्ड बाय दीज थिंग्स. You got an opportunity to live your life. Go ahead and do it. And share whatever your thoughts were for making these choices. Convey them very openly to the interviewing officer.
Yes, yes, sir. In Whether he finds them sensible or not, that is his perception. Why you get bothered by that? yes, sir. Yeah. Does it sensible my answer? Do you feel that, sir, in interview I have? It absolutely makes sense. Yes, sir. अभी आप उसको छोड़ो, आप यही लो, ये नो फ्रिल्स एकेडमी जो है, जिस फिलॉसफी पे काम करती है, कोई और कोचिंग एकेडमी करता है इस तरह से काम? नो सर, नो सर। तो मेरे को तो स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। यस, पर किया तो ठीक ही किया ना। यस सर। फिर आप क्यों डाउट में रहते हो? थिंक रैशनली, what are your thought processes, share them, and if they're rational they will get you success. Yes, sir. If you've chosen some line which is not making sense, you rationally you're not getting the right answers, then there is a problem. You should change course. Otherwise you should stick on with it. Yes, sir. In That is- GTO yes sir. So GTO sir has asked me that, so Saksham, tell me why have you chosen this agriculture and how it will help you? Sir, I have simply answered, sir, I have treated this as a graduation subject, but my interest was in army and I will joining the infantry division, sir. That is non-technical. That is fine. Why are you concerned कि आपका आंसर अच्छा है, प्लीजिंग है कि नहीं है? Yes. Do not get bothered. देखो बेटा, मेरे से SSB में पूछा था, ये नहीं पूछा था why do you want to join the army. मेरे से ये पूछा था इंटरव्यू ऑफिसर ने कि अगर हम आपको इस बार रिजेक्ट कर देंगे तो क्या आप आओगे दोबारा? Yes. So my answer surprisingly to him and to in general was that I said, sir, I will not come again. And it was my first attempt for NDA. तो he said, फिर तुम्हारा मोटिवेशन बहुत कम है। फिर मैं पूछने लगा कि हाँ, ये तो सही बात बोल रहे हैं। Yes. And I said, देखो मेरा मोटिवेशन इतना तो है कि मैं मेरठ से भोपाल आया हूँ SSB के लिए। Yes, sir. इतना ही है, एक बार आना हूँ, दोबारा नहीं आऊंगा। Yes, sir. Because then I have different plans. They make sense to me. I mean, they may not make sense to X, Y, Z or the interviewing officer. How does it matter to me? Yes, sir. Understand. You cannot. Are you getting the point? Yes, sir. That's what it is. I had, Okay, sir. Abhi, Yes, when sir. I was a junior captain, there used to be one person from our Meerut ka hi tha. This boy was ranked some 4 or 5 in the country in tennis. Yes, sir. And suddenly he decided to leave tennis and become a cricket fast bowler. Yes. So that was his decision. Yes, sir. अब right है wrong है उसमें, I mean that's his choice, ना? Yes, sir. Exactly. Are you getting the point? Yes. तो बहुत लोग बोलेंगे बेवकूफ, अरे यार तू तो रैंक प्लेयर है, तू क्यों छोड़ रहा है? उसकी मर्जी है। Understand. ठीक है ना? Thank you, sir. क्रिकेट छोड़ के बॉक्सिंग करने पहुंच गया था। Yes, sir. ये उसकी मर्जी है। Why should we get concerned? ये लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या ये सोशल सैंक्शन है जो मैंने चॉइस किया है? भाई आपने अपने लॉजिक से लिया है, दैट्स ऑल यार, बता दो, खत्म बात। Yes. क्या? यस सर, बस एक इसी बात पे रहता था कि सर जैसे अब आर्मी बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस चल रही है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है, और सर आगे चल के एक एक एक्स्ट्रा जी होता है सर, मतलब टेक्निकल डिग्री होने का। मुझे वही थोड़ा उसमें फैक्टर लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरे जो एसएसबी में भी जितने भी ज्यादातर कोर्समेट थे सर, जो रिसेंटली डिकमेंडर थे, वो भी सब ज्यादा सर उसमें ही थे, क्या कहते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से। अभी करने की कोई बात नहीं है। मैं बीए हूँ, आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, यस और मुझे टेक्निकल चीजें समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। यस
क्योंकि पढ़ के चीजें समझ में आ जाती हैं यार, दिमाग तो वही है। जी सर। व्हाट टेक्निकल व्हाट नॉन टेक्निकल, ये जो है ये तो अब हो गई ना डिविजन्स स्टडीज की एडवांसमेंट्स में। जब आपका जो ये था, दिस चैप हु हैज मेड दिस वेरी फेमस पेंटिंग, मोनालिसा वाली, क्या नाम है उसका? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। हाँ, लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो Yes. दा विंची was knowledgeable in sciences as also medicine, and he was also a top class artist in painting. Yes sir. तो ये डिविजन्स तो हमने कर करा दिए हैं ना। अरे दिमाग तो वही है भाई, सोच के समझ के ही तो अप्लाई करना है। Yes sir. हमको अप्लाई करना पड़ता है, लॉ भी समझनी पड़ती है, साइंस भी समझनी पड़ती है, आई मीन जो भी है यार। Yes sir. डोंट गेट अफेक्टेड, राइट? Yes sir, I have understand you that I should have focused on my core subject, that competence should be increased in my. आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट बोस्टिंग। आई फाइंड कि 2010 से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के मैंने इंटरव्यू किए हैं, आई फाइंड दैट आई अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन बेटर देन ऑल ऑफ देम। Yes sir. तो उन्होंने क्या तीर मार लिया 4 साल की डिग्री करके। Yes sir. समझ में आई बात? Understand. या डोंट गेट हैसल, अपना क्लैरिटी लाओ, टाइम बहुत पड़ा है जिंदगी में, कोर्सेज होंगे, यू विल बी टॉट, ठीक है ना? Yes sir. आप टेक्नोलॉजी का कितना एडवांसमेंट हुआ है यार, आप गैजेट ही लाते हो यूज करने के लिए, उसमें कितनी टेक्निकलिटीज होती है, वो यूजर उधर हैंडबुक लेके समझ नहीं लेते आप उसे। Yes sir. अभी क्या कहते हैं, यूक्रेन वाले जो हैं आर्मी को कितना डाइवर्स इक्विपमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? Yes sir. तो उनके जो है फौजी वो सीख के यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उन चीजों को? Yes sir. That is what it is. I mean, I'm sure so many of them would not have received a very heavy dose of formal training. Because that will not be possible. Yes sir, that was not possible. पर कर ही रहे हैं ना? Yes sir. That's how life is. Yes sir. घबरा मत जाओ. Yeah, Yes, sir. okay. Thank you sir. Welcome. Now let us have Juni Patel. Yeah, Jain sir. You were there early. Yeah, Yeah, yes Juni. sir. Actually, I was having some technical issue with my mic. Sorry for that, No sir. issues, beta. Please go ahead. Ask your question. Actually, sir, I have recently been appeared for SSB and I got screened out. I went as fresher, and now I am having in my mind like, should I join any guidance, any coaching for SSB, or should I be raw as my psychology? I have in my mind that being raw in psychology may be some plus point in that, rather than getting guidance and being artificial psychological mind or something like Juni, have you watched our video about the screening process? that. No sir. Kindly watch that video. You can get the link from Yogita Madam. You can watch that. It will give you a lot of clarity as to what you should be doing. Fine. And in case, I mean, if you are confident that you are fit for selection, your overall competencies are quite adequate, then don't go for any coaching. Not required. But if you are having some self-doubts that maybe there are some gray areas which are needing improvement, and probably of which you are not that much aware, then it would make sense to join our guidance program. Because we do not make anybody mug up the OLQs, their definitions, and how to portray the OLQs and all those stuff which coaching academies do.
so you can safely join. Yeah, And actually, sir, I'm having stage fear. I have like identified that. So for that, should I join any coaching or it will get improved by itself? Choti, there are ways and means of improving these things. You can once again check with Yogita madam. She will give you a link to the interview of Shalika Rana, one of our former students, who spoke Okay. about this aspect. You can get hold of our book, The Practical Guide to Become an Officer, and Yeah, yeah. make up your own plan for self-improvement. But in case you're finding it difficult, then it would make sense to join our guidance program, and where the system has been organized in such a manner that you get regular exposure in group activities towards the things which help you communicate in this PPDT, GD, the lecture aids, group planning exercise, and so on. So, gradually you will be able to overcome the inhibitions and improve your competence as far as the specific area is concerned. Right. Okay, sir. Anything else? No, sir. Thank you. Okay, welcome. Thank you. Now let us have Ajay. जी जय हिंद सर। Jai Hind, Ajay. हाँ सर, मैं अभी आर्मी में ही हूँ और मैं अभी एसएसबी के लिए प्रिपरेशन बिगिनर हूँ, सबसे अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने। और जैसा कि मैं एएमसी में हूँ और जो एएमसी में एनटीआर जो होता है उसके लिए मैं अपीयर हो रहा हूँ सर। ठीक। तो सर मुझे ये पूछना था कि जो एसएसबी होता है तो जो जैसे ये एएमसी जो ये होता है और एक जो टेक्निकली जो ग्रेजुएशन करके जैसे ये दूसरे जो एक्चुअली सर मैं अभी इंग्लिश की भी तैयारी पूरी कर रहा हूँ सर, हिंदी बैकग्राउंड से सर। तो मुझे सिर्फ ये पता करना था सर कि दोनों का कंबाइंड एसएसबी होता है या ये जो आर्मी में जो जॉब वाले होते हैं उनका एसएसबी और इनका अलग अलग होता है सर? नहीं, आपका एसएसबी फौजियों के साथ ही होगा, आपका एसएसबी सिविलियंस के साथ नहीं होगा, unless sir. you are going for entries like CDS or AFCAT, and I don't think you would be going for those entries. Is that correct? Yes sir. हाँ, तो आप फौजी भाइयों के साथ ही एसएसबी देंगे। हाँ वही सर, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कॉम्पिटेट करना थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सर एक क्वेश्चन पूछा। देखो, एक बात तो ये है कि उसकी टेंशन मत लो, ओके और सर। दूसरी बात ये है कि अगर आप सेलेक्ट होने के लायक होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के लायक नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एंट्री जो मर्जी हो। ओके सर। आई बात अच्छा समझ सर। में? यस सर, यस सर। सर एक और बात ये आइडिया हो रहा है कि आपको अंग्रेजी से अंग्रेजी सुधारनी है, आपको ओवरऑल भी क्लैरिटी की जरूरत है कि एसएसबी का मामला क्या है। Then it would make sense that you join up for our guidance program, and we will be able to guide you for regular improvement, as also what all you should be doing. मेन चीज ये है कि आप हिम्मत करने का जो है मोटिवेशन वो होनी चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट करने की, दैट इज द नीड ऑफ नो फ्रिल्स एकेडमी। तो आपका इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो जाएगा, सिलेक्शन होना ना होना तो अलग बात है। ओके सर। ओके ठीक है सर। तो सर ये इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा गाइड सर करेंगे क्या, मतलब अभी से एसएसबी थोड़ा सा और नहीं, दोनों? थोड़ा सा गाइड इसमें मुश्किल है। थोड़ा सा गाइड करना तो ये है कि भाई आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा बोलना चाहिए, ज्यादा लिखना चाहिए उसी भाषा में जो इम्प्रूव करनी है। जो अंग्रेजी पे लागू है किसी भी और भाषा पे लागू है। और अगर आप नो फ्रिल्स एकेडमी का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ आपको हम इन सब चीजों के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली इम्प्रूव करा पाएंगे, बस शर्त है कि आप एफर्ट करने को तैयार हो। ओके सर। योगिता मैडम आपके सेंटेंसेस ऐसे चेक करके भेजती रहेंगी, बताती रहेंगी क्या गलतियां हैं, विद टोटल पेशेंस। आपके ग्रुप मेंबर्स आपको हेल्प करते रहेंगे,
और हेलो। ओरल एक्टिविटीज में, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड। ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके अजय, थैंक यू। हाँ थैंक यू रविंद्र, सो मच। वेलकम। हाँ रविंद्र, हेलो जैन सर। जय हिंद बेटा। सर इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एसएसबी। आई अपीयर होने जा रहा हूँ और 31 जुलाई को मेरा एसएसबी है। ठीक, बट सर व्हेन आई पार्टिसिपेट इन पीपीटी जीडी देन आई फील हेजिटेशन मोर। और कुछ? और सर आई फेस स्टेज फियर एंड आई हैव नो मोर आइडिया अबाउट एसएसबी। रविंदर, अभी तो क्या करिए, आप यहाँ से YouTube में हमारे को फॉलो कर लीजिए, जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वगैरह हैं उनकी बातचीतें सुनिए, अपने एफर्ट करिए, जनरल नॉलेज इंग्लिश में जो कुछ आप कर सकते हैं, यस सर और एसएसबी में जाइए। बात बनने के चांसेस तो थोड़े कम है, तो उसके बाद जो है आप हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और फिर कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ 3-4 महीने में आपके बात बनने के चांसेस अच्छे हो जाए। ये ऑप्शन है एक। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप तुरंत ही हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, लेकिन ये मत मान के चलें कि ये 31 जुलाई तक ही बात बन जाएगी आपकी, क्योंकि 31 जुलाई तक ओके बात बनने की टाइम कम है। ओके सर। टाइम इन चीजों में लगता है, झटके से नहीं हो जाता कुछ। यस सर। तो फिर हम प्लान बना के काम करेंगे, और कितने सिंसियरली आप काम करते हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके सर, यही क्वेश्चन था अपना। ये आप देख लीजिए, आपकी चॉइस है। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके वेलकम। या हिमांशु। So good evening. So tomorrow is my first SSB from NDA entry. I just came here for your benedictions. तो भाई आपने हमारा वीडियो देखा है स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में? Yes sir, I have watched your all videos and also I have followed your books. वेरी फाइन। तो हिमांशु जो है वो वीडियो जो है स्क्रीनिंग वाला, उसे बिल्कुल अंदर दिमाग में बिठा के रखना, और उसके हिसाब से ही चलना। वो आपको स्क्रीनिंग इन में पूरी मदद करेगा। बाकी आई प्रिज्यूम आपने हमारी किताब पढ़ के उसे समझा है, और जो जो हमने गाइडलाइंस दी हैं उनको आप फॉलो करेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होंगे। Okay sir, thank you sir. ये स्कैर्सिटी माइंडसेट में नहीं पढ़ना है, मारामारी में नहीं पढ़ना, इम्प्रेस करने के चक्कर में मत रहना। जस्ट इन GTO सीरीज बी अ गुड इफेक्टिव टीम मेंबर, एंड ओवरऑल डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन। Okay sir. और गलतियां चलतियां हो जाती हैं तो लेट इट नॉट अफेक्ट द अदर थिंग्स विच आर गोइंग टू कम। जो हो गया हिस्ट्री में चला गया, उसे जाने दो। जैसे Okay, बैट्समैन बॉल से बीट हो जाता है, तो उसको अगर ध्यान रखता रहेगा तो अगला भी नहीं खेल पाएगा ना। हाँ सर। भरोसा रख के चलिए, थिंग्स शुड वर्क आउट। सिलेक्शन हो जाता है तो प्लीज कम एंड अटेंड आवर सेशन एंड कंफर्म के बाद बन गई आपकी। Okay sir. Yes sir, thank you. नहीं बनती है तो फिर हमारा प्रोग्राम तो यही ज्वाइन करने के लिए। Yes sir, surely. ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड गुड लक। Thank you sir. वेलकम। हाँ यस ऋषभ। यस नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मैं क्लास 11th स्टूडेंट हूँ और एनडीए एंट्री के थ्रू मैं आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, इधर इन बहुत एयर बढ़िया। फोर्स और आर्मी। और मैं आपके वीडियोस काफी पहले से देख रहा हूँ, क्लास 9-10 से ही। थैंक यू सो मच। हाँ तो सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो उस काम में पूरा टाइम जा रहा है मेरा, मतलब पूरे दिन, मतलब बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। और बताइए। हाँ तो सर क्या है कि जेई मेंस और एडवांस का जो अटेम्प्ट है ना, वो एनडीए के एसएसबी से कोइंसाइड कर जाता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा जेई मेंस का, वो एसएसबी से पहले एसएसबी से कोइंसाइड कर जाता है, और जो सेकंड अटेम्प्ट है मेरा जेई एडवांस का, उससे भी एनडीए 1 का फर्स्ट एसएसबी कोइंसाइड कर जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 12th में ही
एनडीए 1 दूंगा अप्रैल में, जिसका एसएसबी मुझे जून जुलाई में देना होगा, और स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैं देके एसएसबी में अपेयर कर सकता हूँ। एम आई राइट सर? जो आप अगर एलिजिबल हैं तो वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आगे वाले उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ओवरऑल कॉम्पिटेंस ठीक ठाक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा। प्राइमरीली अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपकी जीके शीके ठीक ठाक है और फिटनेस ठीक ठाक है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेट अस से कि इस प्रिपरेशन के चक्कर में आपकी जीके जो है वो थोड़ी लो लेवल पर है तो वो भी चल जाएगा, so long as you are absolutely clear about the things which you have been studying। यस सर। समझे? तो टेंशन नहीं है, कोई टेंशन हम क्रिएट करके रखते हैं। अच्छा। एंड हाँ, सर अगर आप ऋषभ लायक है ना ओवरऑल तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई। यस सर। एंड बस सर वो फोकस करो, एसएसबी के बारे में ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर। और अगर मैं मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मतलब जो जिस हिसाब से मैंने बताया था कि मैं 12th के अप्रैल में एग्जाम दूंगा, जून जुलाई में रिटर्न देता हूँ, तो उस हिसाब से ज्वाइनिंग दिसंबर में मुझे करना रहेगा, 12th के दिसंबर में। और फिर ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि, क्योंकि उसके अगले अटेम्प्ट में दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा एग्जाम कोइंसाइड कर जाएगा, तो मुझे हाँ, एनडीए 2 में शिफ्ट किया जा सकता है क्या उस टाइम के बाद? बेटा देखिए क्या है, जो क्या कहते हैं, एनडीए का जो सेशन जनवरी में स्टार्ट होगा और अभी आपका 12th का एग्जाम मार्च में होना है, तो आप जनवरी में डेफिनेटली ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 12th की डिग्री एक असेंशियल टेक्निकल क्राइटेरिया है। यस सर, मैंने पढ़ा था कि स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं और फिर कर सकते हैं ज्वाइन। बेटा वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा उस कोर्स के लिए जो जून में स्टार्ट होगा, जून या जुलाई वाला। आप जनवरी के कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते मार्च वाले एग्जाम से पहले, नॉट पॉसिबल। ओके सर, समझ क्योंकि मैंने गए? ये चीज पढ़ा है कहीं पे कि ऐसा किसी अरे ज्वाइन भाई, किया लोगों ये ने। आप ये पढ़ने में आपकी गलती है, क्योंकि ये कॉमन सेंस के बरखिलाफ है। 12th डिग्री होना ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है एनडीए की ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आपका एग्जाम मार्च में होना है तो जनवरी में कैसे आपको उसी साल में ट्रेनिंग ज्वाइन करा देंगे? लॉजिकल लगती है बात ये? बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगा कि एनडीए 2 में शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब अगर किसी ने एनडीए 1 में क्वालिफाई किया उसे फिर नो शिफ्ट कर नो सकते नो नो नो, यू कांट डू दैट, क्योंकि वो आता ही उसके लिए है ना। हैं। ये एनडीए वो सीरियल नंबर ये आएगा, इसके लिए आप है टेक्निकल एंट्री कोर्स सो एंड सो, एनडीए कोर्स सो एंड सो। तब मुझे किसी ना किसी एग्जाम के टाइम पे ही देना पड़ेगा एसएसबी, और कोई रास्ता नहीं है तो फिर। हाँ, दैट इज एज यू आर एक्सप्लेनिंग, तो ऐसा ही होगा, तो उससे घबराइए मत भाई। जो आपके लिए चीज लागू है क्या बाकियों के लिए नहीं होगी? सर होगी क्या नहीं होगी? नो सर, नहीं हो पाएगी। अरे बाकी भी आपके जैसे हैं, उनके कौन सा एग्जाम अलग टाइम पे हो रहे हैं? अच्छा हाँ, नहीं सर, सही बात है। तो सेलेक्ट उनमें से भी होंगे ही ना, वैसे ही तो होंगे, इंडियन सोसाइटी से ही तो सेलेक्ट कर रहे हैं लोग। ओके सर। तुम्हारे लिए कोई यूनिक कंडीशंस थोड़ी हो गई हैं मेरे भाई। राइट सर, अंडरस्टूड। समझ गए? और तो अपने कॉम्पिटेंस पे फोकस करो, इन चीजों से घबरा मत जाओ। दम होगा तो आप सेलेक्ट होगे और दम नहीं होगा तो नहीं सेलेक्ट होगे, ये है मेन चीज। हाँ राइट सर। एंड सर मैं क्योंकि जेई प्रिपरेशन की वजह से पूरे दिन ऑक्यूपाइड रहता हूँ, मतलब हर दिन अपना बेस्ट दे के सोता हूँ मैं हर रात, तो मतलब तो उसके बाद अगर मैं। आप इतना कर रहे हो, परफॉर्म बेस्ट दे रहे हो, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इस वजह से ना मैं कुछ ऐसा खास हॉबी जैसे होता है बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये बहुत कम ही कर पाता हूँ मैं,
क्योंकि और इसके अलावा मैं हॉबी स्पोर्ट्स खेलता हूँ, हॉबी से फुटबॉल और जिम। सिलेक्शन नहीं होता। ओके। आप हमारे से लिंक लेना यस सर। योगिता से। धारवी स्लम ऑफिसर करके मैंने एक लिखा था ब्लॉग के साथ, उसको पढ़ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा ये हॉबीज से नहीं सिलेक्शन हुआ करते, समझे? अच्छा, ओके सर। क्लियर होता है। फाइन, ओके। या यश, यस थैंक यू सर। Yes, sir. Jain, sir. यही चीज Sir, actually, I wanted to ask about my SSB that is on 31st July. So, sir, I am an NCC cadet, and currently I am doing second year BSc Computer Science, and I am also doing NCC. But, sir, in my last SSB attempt, as it was in August, so sir, I was not able to go for the national camp, that is the VSC camp, Vayu Sainik camp. And sir, due to my college schedule and my classes, so sir, I am not able to put in that much for my NCC. So sir, if I put yes in the NCC column, so sir, follow-up questions will come in interview. So sir, how can I tell them, or should I put no? देखिए, नो और यस किस चीज के लिए पूछ रहे हैं आप? सर PIQ में वो पूछते हैं ना, इफ हैव यू डन NCC? अरे तो आप लिखिए ना, झूठ क्यों बोलते हो? Yes, आपको उसका वो नहीं, सी सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, दैट्स ओके, बट आपने एनसीसी जो किया है तो वो लिखो ना। यस सर। या बट जब आप एनसीसी वाले हो, सब एनसीसी वालों को मैं प्राइमरी बात यही बोलता हूँ कि एनसीसी के भरोसे मत रहो, रिटन एग्जाम के भरोसे जाओ। इन एडिशन यूज द एनसीसी एंट्री एज अ बोनस। Yes, sir, definitely. As it was my NDA attempt, so that is the main thing. But sir, since the IO will come to know that I am doing SSB, so sir, he will ask about the NCC, that what have you done and all. But sir, I was not that much active in that because of my SSB also. जितना पता है उतना ही बता देना, उससे नहीं पिनलाइज हो जाएगा, डरे मत रहो यार। ओके सर। डरे हुए मत रहो, जो है वो बता देना ओपनली, ठीक? यस सर, ओके सर। इंटरव्यूइंग ऑफिसर बेवकूफ नहीं है। वो जो सेंसिबल डिसीजन है कि अगर आप सेलेक्ट होने लायक हो तो सेलेक्ट करेगा और नहीं हो तो नहीं करेगा, ये है मेजर बात। उसमें ये छोटी मोटी चीजों से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये जो एक्चुअली ये मैनिपुलेट करना, छुपाना, ये इंडियन सोसाइटी की डिफॉल्ट सेटिंग है। इससे आप लोगों के सिलेक्शन चांसेस खराब ही होते हैं, अच्छे नहीं होते। यस सर, राइट। चतुराई और स्मार्ट एक्ट जो हम कहते हैं ना, यस सर, वो स्मार्ट एक्ट आपको सिलेक्शन नहीं कराते। यस सर, स्मार्ट स्मार्ट एक्ट के लिए जो है ना, वो मोदी और बीजेपी को छोड़ दो काफी। कि उन्होंने बोला Yes. बजरंग दल को बैन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला बजरंग बली को बैन कर रहे हैं। हमें don't get into stupid detail because the interviewing officers are not stupid. You know, Indian masses may be, it is debatable whether they are stupid or not, but interviewing officer बेवकूफ नहीं होते। Yes sir, right. स्मार्ट एक्ट मत देखना। Yes sir, definitely. पेनलाइज होगा, नुकसान कराओगे अपना। Yes sir, समझ गया। And sir, any specific like advice you would like to give sir, as I am a repeater? तो सर कहते हैं कि रिपीटर्स का थोड़ा फिश मार्केट और ये सब ज्यादा हमारा वीडियो देखा है स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में। यस सर। उसको फिर देख लेना, उसे फॉलो करो, दैट वुड गिव यू इनफ एडवाइस, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। या एंड्रॉइड ब्लू क्या कहते हैं, ये जो है एक आ रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। सर आई हैव वन डाउट दैट सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी हॉबी क्या है, मतलब क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाई की वजह से टाइम ही नहीं दे पाता किसी और चीज को।
पहले मैं अरे तो बड़ी खेलता अच्छी था। बात है यार, हॉबी हॉबी बनाने से नहीं सिलेक्शन होता किसी का यार। ये यस सर। आप बताओ मुझे, फौज में ऑफिसर बनने के लिए हॉबी होना क्यों क्राइटेरिया होगा? मत पड़ो इस चक्कर में हॉबी बॉबी के। अगर आप फिट हो गए तो सेलेक्ट हो गए, फिट नहीं हो गए तो नहीं सेलेक्ट हो गए, मोटी बात यही है बस। जी सर। ठीक है ना? क्योंकि अगर 6 हॉबी है तो बेटर आदमी हो गया क्या नहीं नहीं सर। है? नहीं सर नहीं। एक आपके पास बंदा आया जो आपको लगा कि यार इसकी एकेडमिक एबिलिटी भी ठीक ठाक है, फिजिकली जनरल नॉलेज भी ठीक ठाक है, फिजिकली भी ठीक ठाक है, ठीक, और उसकी हॉबी 0 है, और एक आपके पास आया जिसकी ये क्वालिटी दूसरे से कम थी, कैंडिडेट बी, लेकिन गार्डनिंग, कॉइन कलेक्शन, क्या कहते हैं, रीडिंग फिक्शन, और क्या कहते, और उसकी 2-4 और हॉबीज हैं, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? सर आई विल सिलेक्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट वन ना, कि वो ओवरऑल ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है, ऐसे ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी सेलेक्ट करेगा, हॉबीज के बेसिस पे ही सिलेक्शन करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, आई गॉट नाउ। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। यस, Vivo 1807। Yeah, James, sir. जय हिंद। Am I audible, sir? You are audible, Vivo, go ahead। Yes, sir. Sir, so I was watching so many videos on YouTube, sir, different platform. So, sir, I found where used to give link to join your meeting on Sunday. So, sir, I joined and sir, I want to prepare for SSB interview. But sir, I was preparing for Agniveer like Indian Army. So sir, that day I was interested in my study, so I cracked the ND. And sir, so I have cleared my ND written examination. Nowadays, sir, I am preparing for SSB on myself. But sir, one of my friend who sent sir your book on Telegram, the practical guide like book, sir. So I read 2 to 3 pages. So sir, after that I found your No Frills about your No Frills Academy, and also I also saw watch many videos on YouTube. So sir, I decided to join your link, and sir, I decided, sir, I will ask you 1 to 2 questions to sir. So sir, my one question is that please sir tell me, a villager's boy can selected and can become army officer, because sir, his communication skills and also all these sir things not good, and also the sir environment he did not face any any college and any universities. So sir, how should it improve? आप बेटा इसकी टेंशन में मत रहो, आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, हम आपको गाइड करेंगे, आपने सिंसियर एफर्ट करना है, उसके लिए तैयार हो आप? यस सर, आई एम रेडी सर। आप कहोगे 2 दिन पेड़ पर लटका रहे उल्टा लटक सकता हूँ सर मैं। नहीं नहीं, उल्टा नहीं लटकने की जरूरत है, सिंपल सिंपल सीधे से काम हो जाएगा, डोंट वरी, आप आ जाओ, ठीक है, विल गाइड यू टू इम्प्रूव, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके सर, डेफिनेटली। हाँ, भरोसा करिए, आप बात बनाएगा। बट सर, जी यस सर, जैसे कि सर बट सर इतना किया है तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे कि एक बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से ना के बराबर से ऊपर तक उठना फिर भी ठीक है, में सर हार्ड वर्क और मेहनत तो होता है। बट सर इतना भी लगता है कि मैं वहां से नीचे से देख देख करके सुन करके और मेहनत करके इतना आ गया। बट सर अब मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं बॉर्डर लाइन ही टच पे हूँ। बट मेरे को तो डिफिकल्ट भी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि गिव अप कर दूं। देख, सेफ रहेगा कि तू ज्वाइन कर ले, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, अगर अपना भरोसा करके मेहनत कर रहा है ठीक ठीक चीजों पर जो मैंने बताई हुई इम्प्रूव करने की, तो तेरा सिलेक्शन ऐसे भी हो जाएगा। यस सर। ठीक है?
Okay, sir. Got it. Okay, beta. Take care. Bye. Yes, sir. Definitely should join your session. Okay, most welcome, beta. Yeah, Prabhanjan Zalki. Sir, no question, sir. I'm just here for listening to it. Okay, okay. So nice of you, beta. Thanks a lot for listening. Yes, anybody, any more questions? साहिल आप तो पूछ चुके हैं. Sir, I have network issues at that time. अच्छा अच्छा मैं अच्छा. पूछिए, ओ सॉरी. आप ही पूछिए बेटा. Now I can hear you. Go ahead. Jain, sir. Sir, my question is to you that, sir, there are two main important days in everybody's life. So first, so when they are born, and second one is, sir, when they come to know, so why they are born. Matlab, sir, how can we decide, sir, our purpose of our life? How can we define, sir? यार बड़ा मुश्किल सवाल है. तुमने मेरे से पूछ दिया. मैं 63 साल का हो गया. मुझे नहीं पता चला कि अब मेरा पर्पस क्या है. क्यों भगवान ने बनाया मुझे. ये भी मिस्टेक हो गई. I'm So, telling you, sir, you are I'm doing great job. not joking. I'm not joking, but I really don't know. ठीक है ना. ओवरऑल मतलब जो मैं देखता हूँ यार, ये जैसे भी क्रिएशन हुई है, ओवरऑल उसमें हम बड़े एक इनसिग्निफिकेंट सी एक चीज है क्रिएशन की. ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझते हैं. उस चक्कर में हमने दुनिया का भट्टा बिठा दिया है. तो दैट इज व्हाट वी हैव डन. तो थोड़ा इम्पोर्टेंट अपने को कमी समझो तो ठीक है. Yes, तो sir. भाई पर्पस का तो यार अपने आप ढूंढना पड़ेगा जवाब. मुझे तो मिला नहीं. कोशिश कर रहा हूँ मैं भी ढूंढने की. Sir, I have asked this question to our unit OC also, but they telling connected to dharmic ways. They're telling Sadhguru has given something, so we are continuing. एक्चुअली क्या हो जाता है ना बेटा, जनरली क्या होता है जिससे आप ये सवाल पूछते हो ना, तो वो ये सोचता है कि यार अब मैं इसको कह दूं कि जवाब मुझे ही नहीं मालूम, तो थोड़ी शर्म सी आती है. मैं शर्म महसूस नहीं करता क्योंकि जब मुझे ही मालूम नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं. Are you getting the point? Sir, I am a psychology student also, sir. I am currently studying class 12. Sir, I have seen our seniors who have been asking question to you that they are facing problem of self-doubt. They are giving many interviews, having conference out many times. But the thing is that, sir, they are not justifying their answer. If they are asked why you want to join Indian Army, they are blank. They don't know why to join. They are thinking at that time what we should answer. That's the psychologist get them that it is not the man we needed. We need someone else. हो जाता होगा ऐसा. हाँ, पर वही है जो कॉम्प्लिकेशन में पड़ता है उसको कॉम्प्लिकेशन अपने आप क्रिएट कर लेता. सीधी सीधी बात जो है वो बता दो यार. That is my advice. Yes, sir. Our psychology ma'am is very good, sir. He told us that just be yourself. There is no preparation of SSB. It's all about your life, your hobbies, what you do on a daily basis, how you take situations, and how it's only about your mind. How you take situations, what makes you limit your mind. That's all. If you think that you are going to interview having certain problem of, if you are saying good English, it means you are good. If they're having a mental fixedness, if they speak in good English, then they are or going to select. If not, they are not. So they're having limitations in the mind. That's the reason. आपकी मैडम ने बिल्कुल सही कहा और आपकी विचारधारा भी बिल्कुल सही है. पर हाँ, जो सवाल आपने पहले पूछा था उसका जवाब मेरे पास नहीं है. आप अपना ढूंढिएगा. Yes, sir. हाँ. Sir, I just want to ask question, sir. मैं एक्चुअली सोच रहा था जब साहिल आपने सवाल शुरू किया कि पहले तो इम्पोर्टेंट डे ये होता है कि when you are born, and the second important day is when you die, and when you are close to death you realize कि यार मैंने क्या किया. So you get not much answer कि whether my life was very useful, productive or not. तो आप सोचते हो कि चलो कहीं दोबारा मौका मिलेगा तो बेटर करेंगे. तो मैं भी शायद ऐसा ही मेरे साथ होगा, आपके साथ I don't know.
Yes, sir. I was asking these questions to sir, many of these great personalities, sir, our principal, our unit sources, but they are getting connected to another part. I am asking straight away, but they are linking to another and telling the if they are telling just telling what you are doing, it's your karma, and you will get from that only. You don't एक तरह have to से तो think बात about it. एक तरह से बात सही कह रहे हैं कि भाई कर्म आपको जो मिला है करने का उसे अच्छे से कर लो, भाई आपके हाथ में वही आपके कंट्रोल में, तो दैट शुड गिव यू सैटिस्फैक्शन, और क्या है, बात तो सही Yes, है। sir. Sir, my last question is to you, sir. I've been studying NDA, sir. I have to prepare for SSB, and I have date for SSB, sir. My only thing is I have searched many YouTube channels and seen many videos of yours, sir. I get to know that there is no wrong answer. Just you be yourself and justify what you are. There is nothing else that SSB needs. सही बात है, और आप अगर फिट होंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अनफिट होंगे तो सेलेक्ट नहीं होंगे, उसमें Yes, मैंने sir. नॉट हेल्प आइदर वे। Yes, sir. सही बात है, बात बन जाएगी आपकी, राहिल, नॉट टू वरी। Yes, sir. Thank you, sir, for your valuable time, sir. Most welcome, I'm glad Sahil. to have God you. bless. God bless. I think we have had all questions, Yogita. Sir, I am having 2 more questions, sir. और 2 बचे रह गए, चल 2 पूछ ले यार। Sir, in GD, sir, when we get lead, sir, in this recent SSB, I got lead in that AI effect in defense, health, and administration. So, sir, some are talking, sir, in group, what has happened, sir, they have mixed the both of them. They are first talking of defense, then that same guy is also talking of, sir, health also. So, sir, is it the way, sir, correct way क्या है, sir, GD का फिर उसमें? करेक्ट वे तो ये है कि जो भी बात करो वो क्लियर करो। अगर आपको बताया गया है कि एक लीड लेनी है, तो आपने जो लीड चुनी है आप उसी की बात क्लियरली करें। ये तो हिंदुस्तानी मेथड है ना कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, घुमा फिरा दो। हाँ सर। देखा नहीं, अब भाई आप देखो ना, आप ऊपर से ही नहीं। अब सवाल पूछा गया मोदी साहब से, ये आपके माइनॉरिटीज वगैरह के साथ जो है मामला ठीक नहीं हो रहा, तो मोदी साहब ने कहा कि हमारे तो डीएनए में डेमोक्रेसी है। भाई ये तो सवाल नहीं पूछा था ना। यस सर। तो जब हमारा ऊपर से नीचे तक सवाल जवाब का मामला ये है, तो सोसाइटी इन्फ्लुएंस तो होगी ना, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा होगा ये मास्टर स्ट्रोक जवाब भी है। सर मैंने सर डिफेंस के उसमें कहा था कि सर एआई का सबसे ज्यादा इफेक्ट डिफेंस के उसमें हो रहा है। आपको जो लगता है सही, आप वो बात करिए। और अगर जीटीओ ने कहा है कि जो लीड आपने चुनी है, जो कि सबसे आपको सूटेबल लगती है, तो आप उसकी ही बात करिए। दैट इज द करेक्ट थिंग टू डू। व्हाट अदर्स आर डूइंग, दैट्स व्हाट आई वाज गिविंग एन एग्जांपल ना, कि बाकी बेवकूफी से अगर जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना आप भी वही करना शुरू कर दो। So sir, can we mention also, sir, some that our point have some disadvantage and advantage also? So can we mention both of them in sir disadvantage also? तो अगर है, आप जिस टॉपिक से अगर आपको चूज किया है तो बोलने में क्या दिक्कत है? Yes sir. और yes sir, second question sir, in GP sir I was unable to complete my written part, sir. What is the main points and priorities? How to? आपने हमारी बुक पढ़ी है बेटा? No sir, I have just watched videos. बुक ले लो हमारी, उसका आप देखना। शॉर्ट सैंपल जो है उसे अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप 7 मिनट में लिख पाओगे। आप तो टेंशन नहीं रहेगी आपको ये कंप्लीट करने वाली। सर मेरे एनडीए के टाइम पे सर मैं मेरठ में सर जो दूसरे वो है ना सर, कर्नल राजीव देवगन, उनके पास गया था सर। पहले मुझे पता नहीं था सर, फिर हमारी कॉलोनी से ही आप सर जानते हो सर, आपकी स्क्रीनिंग वाले वीडियो में वो है रजत राणा, जो एक स्टूडेंट थे, वो हमारी कॉलोनी में रहते हैं सर। वो भैया उन्होंने मुझे सर, उसके बाद स्क्रीनिंग तो सही हो गई सर आपकी वीडियो देख के।
सर बस अब आगे अब या तो कर लो सिस्टमैटिकली अपना प्रिपरेशन, नहीं तो हमारे पास ज्वाइन कर जाओ, देन वी विल गाइड यू। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, नहीं तो उससे राणा था, क्या कम से कम किताब तो दे दे तेरे को, उसका तो सिलेक्शन हो ही गया। अच्छा हाँ सर, उनका दिल्ली उसमें हो गया यूपी प्लस में। अच्छा अच्छा, दैट्स व्हाट यू कैन डू। ठीक, ओके बेटा, टेक केयर। अच्छा, we'll take one more question last from Jaydat Singh. जैन सर। जय हिंद बेटा। हाँ जी, सर मुझे इस बात का जरा चिंता है कि सर मेरा एक फ्रेंड करण सिंह मेरे स्कूल में था, मैं उसको पहले से जानता हूँ, मतलब बचपन से। वो बहुत होशियार है, मतलब वो ड्रामा में भी बहुत ये अटेंड करता था। मतलब मेरे हिसाब से वो स्पोर्ट्स में कम होते, सब चीज में दिमाग के इसमें ऑलराउंडर था। तो सर वो एनडीए उसका हुआ 3 बार उसने किया, लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया वो 3 बार, 3-4 बार। तो सर मुझे वो लग रहा है कि वो रिकमेंड नहीं हो रहा, तो मैं हो पाऊंगा या नहीं, वो इस बात का जरा टेंशन है मुझे। देखिए, यस, उससे थोड़ा इम्पैक्ट तो होता है अपने पास वाले से कि उसका रिजल्ट नहीं बना, पर देखिए सब अपनी जिंदगी में दौड़ अपनी अपनी दौड़ रहे हैं। ठीक, तो ओवरली इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, और आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको असेस करके बताएंगे कि बेटा ये चीजें इंप्रूव करनी है, और फिर पेशेंटली उन पे वर्क करिए। जल्दबाजी के चक्कर में रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। पेशेंटली अगर आप वर्क करने के लिए तैयार हैं तो आइए, तो हमारे प्रोग्राम से आपको बेनिफिट मिलेगा। सिलेक्शन होता है नहीं होता ये तो हम नहीं कह सकते हैं, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में आपकी कॉम्पिटेंस राइज अगर करती है तो करियर में तो बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा आपको। जी सर अभी मैं सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने एनडीए का एक भी अटेम्प्ट दिया नहीं था सर। मैंने सोचा था कि मेरा हो नहीं पाएगा, इस सोच के मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया। अभी मैं सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नहीं, आप उसको छोड़ मत दो, आप आ जाओ तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी कैसे जिंदगी ऑर्गेनाइज करके चलना है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पे कैसे फोकस करना है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जी सर। ठीक है, जी सर, धन्यवाद। ओके बेटा, वेलकम। Okay then, thanks a lot all of you for your patience and asking your questions. I hope I have been able to settle your queries to a reasonable degree. Thanks a lot. Take care. God bless. Bye bye.